Oh my god, it is scary, bro. Want to visit the cave? Then you should visit this guy. He is very friendly, muscle bulkier guy. Turkish guy. Turkish guy. Yes. Kardeş. Kardeş. Hello everyone, welcome to my new vlog. Today I'm going to explore Alayna's oldest cave. So guys, this is the name of cave, Damlatas Cave, and you can buy a ticket. And right now is big line, and from here you can also buy some ice cream. See? There's big line, and also there is some history written here, but it's in Türkiye. एंट्रेंस है, आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ कि आप नो स्मोक या मतलब आपको कोई चीज़ वगैरह को फेंकनी भी नहीं है। और ये इसका जो इनसाइड का व्यू है। ओह माय गॉड, इट्स सो डीप। और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट भी आए हैं, देखें यार। ये इन लोगों ने बेंच भी लगाई है और बैठ सकते हैं ऊपर। ये कितनी गार प्यारी है यार। और ये ऊपर देखें, अभी स्पाइक देखें है इसके, इस गार के। और यहाँ पर बेंच का निज़ाम है, तो आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पर ये कि साल्ट होता है, तो ये बिल्कुल हेल्दी होता है आपकी जो लंग्स के लिए। तो यहाँ पर अंदर ब्रीथिंग लेना भी एक हेल्दी होता है। और यहाँ पर इसकी हिस्ट्री मेंशन है इंग्लिश में। तो इसका नाम जो है वो दमलातस केव, मतलब एक गार का नाम है। वाज फाउंड एज ए कोइंसिडेंट ड्यूरिंग, भाई ये गार जो है एक इत्तेफाक से लोग ढूंढी थी 1948 में। तो इसकी पूरी हिस्ट्री मेंशन है यहाँ पर। और यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। ये लोगों ने कैमरा शैमरा सारा कुछ लगाया हुआ है, इनको ये मॉडरेट करते हैं। ये इसका व्यू देखें यार। ये गार के बिल्कुल करीब की कोने, जो निचले वाला कोना है, उसमें आ गया हूँ। ये देखें यार। और आगे से आप नहीं जा सकते, ये पूरा डार्क है। ये देखें, ये इसका एंड है। और यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हो। मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो बस, अभी मैं अगर ऊपर खड़ा हूँ, ये ऊपर मुझे लग जाएंगे ये पत्थर। यहाँ से आप देखें, यहाँ से ये देखें, ये बिल्कुल ये अंदर आगे नहीं जा सकते। ये बिल्कुल यहाँ से तंग हो गई है। उन लोगों ने आगे लाइट भी लगाई। और अंदर जाना भी थोड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि सांप वगैरह वो हो सकते हैं। Oh my god, it is scary, bro. बाहर निकल रहे हैं, और अंदर तो बड़ी गर्मी थी, मौसम वो था। या राइट नाउ सी, बहुत बड़ी रश है, लोग इधर आए हैं। तो फाइनली अभी हम केव से बाहर निकल गए, और बड़े मज़े का था यार। हिस्टोरिकल चीज़ इन लोगों ने बाकायदे इन चीज़ की मालकी की है। ओके, आई विल आस्क फ्रॉम माई फ्रेंड ओकास हाउ इट वाज। Guys, I found this amazing man. What's your name? Timo. Timo, marhaba. Merhaba. Marhaba. So he will explain about this outfit. Yes, okay. Say something about your outfit. I love Turkey, I love Alayna. Uh-huh. You're welcome. Ah, okay. So here prices you can This is see. my shopping, you can looking. Okay. Record inside. Okay. Shukran. So inside there's like a lot of creams, some gels, and in Turkey, wherever you go, you will find this bird evil eye. Yeah, you can find. €41. Yeah.
So these all things are in 1 euro, right? Have you Instagram? Oh. I have YouTube. I will give you, okay? Okay. Okay. See? That's amazing. So if you want to visit the cave, then you should visit this guy. He's very friendly, muscle bulkier guy. Turkish guy. Turkish guy. Yes. Kardeş. Kardeş. Guys, so we came out from the cave, Damlatas Cave. Damlatas means dipping of water from the upstairs, like from some stones to the sand. So I will ask from my friend Akash, how was the experience about this cave? Yes, this cave is amazing. Humidity is above 98%, so it's very difficult to breathe, but it's very healthy to breathe because this vapor has a lot of salts, a lot of minerals, microelements, so it's very good for your lungs. So if you have problem with breathing, you can come here, breathe, and regenerate your lung. This cave was discovered 70 years ago when they were building a shipyard, and they noticed that is something in the rocks, and they just opened it and they found 20-25 meters deep cave, and now it's a very nice place. It's a very touristic place, so you have to visit this place, so we can recommend it. Thank you so much for your detailed description. Really, so it was amazing trip, and if you are in Alayna, then you should visit this cave. If you have some problem with your lungs, pulmonary system, then I highly recommend you come here and visit and see this amazing adventure. So we are going to finish this vlog. Don't forget to share and subscribe. We will see you in the next vlog. Yeah, Goodbye. Please subscribe for our Yeah. channel. Bye. Bye.